Am I audible to you, beta? Yes, sir, we can hear you. Okay. Yes, sir. Yeah. So basically, at today's start, one next point in limit, and that is called algebra. Algebra, and you can say rules of limit. So basically, that is the fundamental point. So basically, we have to start the some fundamental condition here, algebra and rules of the limit. So basically, what we can do. So first of all, let's say first rule is that the limit x tending to a k times of fx. X tending to a k times of fx. So beta, one thing is clear, guys. Here k is called constant. Here k is called constant. So constant is separated from the expression and k into limit x tending to a fx. And the important condition is that if k is not equal to 0. Whenever k is equal to 0, this k becomes 0 and the k multiplied with any finite number becomes whole function 0. So basically, first condition is that the limit extending to a k times fx. So k is the constant function. It is outside from the limit. So k is outside from the limit and limit is applicable on only of the function. Condition is that k is not equivalent to 0. Rule number 2. Rule number 2 is that the limit x tending to a fx plus gx. Okay. So basically, guys, we have to separate the limit here. So limit x tending to a fx plus limit x tending to a gx. Okay. So limit x tending to a fx and limit x tending to a gx. Rule number 3. Rule number 3 is that the limit x tending to a fx minus gx. So what we can do, beta? So simply limit x tending to a fx minus limit x tending to a gx. Okay, limit x tending to a gx. But beta, one important thing is that above can be done provided RHS does not take any indeterminate form. Okay, guys, beta, here I think Aditi and Sai, what's the name? Sai Akshit. Akshit. Yes, sir. Yes, sir. Sai Akshit, this is your first class, बेटा. हाँ सर. तुम्हारा पहला क्लास है क्या है? हाँ सर. अच्छा. तो लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत पता है कि नहीं पता है तुमको? पता है सर. पता है. हाँ, चलो ठीक है. तो देखो बेटा, ऐसा होता है ना कि हम लोग अब देखो थोड़ा सा क्या होगा कि हम ऐसे समझ लेते हैं, हम लोग एक साथ ही लिख लेते हैं ताकि हम आपको एक बार में ही सब कुछ क्लियरिफाई कर लें, है ना. हम एक साथ बेटा यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं ताकि हम एक बार में दोनों बात को क्लियर कर लें. देखो बेटा, कभी कभी बेटा ऐसा क्वेश्चन होता है कि जब तुम क्वेश्चन को सेपरेट करते हो ना, तब जाके उसका सॉल्यूशन निकलता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जब तुम सेपरेट कर देते हो तो उसका सॉल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा बेटा. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट करके, नोट 1 कि above can be done provided right hand side does not take
does not take any indeterminate form that is infinity minus infinity. Okay. Note number 2. Second note. If one of the limits on RHS exists then we can always separate irrespective of other limit irrespective of other limits. Okay, this is the point number 2. Okay, this is the point number 2. पॉइंट नंबर 3 देखो बेटा, ये तो पॉइंट नंबर 2 हो गया बेटा. जस्ट नोट द पॉइंट नंबर 3. नोट पॉइंट 3. One separated only values can be clubbed together. Only values can be clubbed together, not expression of x. Not expression of x. Okay बेटा, not expression of x. तो बेटा देयर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा. देखो सबसे पहले बेटा क्या है कि above can be done provided right hand side does not take any indeterminate form. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसको तो मार्कआउट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने लिखवा दिया है कि above can be done provided RHS does not take any indeterminate form that is infinity minus infinity, such as. Next point is that beta, if one of the limits on RHS exists, then we can always separate irrespective of other limits. That is the point number 2, very important point. And this is the point 3 beta. One separated, only values can be clubbed together, not expression of x. मतलब यदि तुम सेपरेट कर दिया तो दोनों का तुमको आंसर बेटा मिलेगा, है ना. ऐसा नहीं कि तुम दोनों फंक्शन को फिर से ऐड कर देना. तुमने मानो कि दोनों को सेपरेट कर लिया, तो सेपरेट करने के बाद जो तुम्हारा आंसर होगा वही तुम्हारा आंसर आएगा, है ना. ऐसा नहीं कि तुम एक्सप्रेशन को जाके ऐड कर देना. गॉट इट ना. तो यू कैन मानो कि तुमने सेपरेट किया तो फर्स्ट फंक्शन से तुम्हें कुछ आंसर मिलेगा, फिर तुमको सेकंड फंक्शन से कुछ आंसर मिलेगा, फिर तुम दोनों को ऐड कर लेना. लेकिन तुम फंक्शन को ऐड मत कर देना, है ना. तो इन सब बातों का तुमको ध्यान बेटा रखना पड़ेगा. दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट थिंग, है ना. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको याद रखना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज टू क्लियर गाइस. एनी डाउट? फाइन बेटा. Yes, sir. Okay. Next, come on the points. Okay. So come on the next point. Rule number 3. Limit extending to a fx into gx. fx into gx, है ना.
तो अब दोनों प्रोडक्ट फॉर्म में है बेटा। देखो ये दोनों कैसे फॉर्म है बेटा, प्रोडक्ट फॉर्म में। कैसे करना पड़ेगा बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, ओके, इनटू लिमिट extending to AGX. You can separate it, but beta, condition is that provided, beta, note condition, note one, provided RHS does not, RHS does not take any indeterminate form, any indeterminate, any indeterminate form. This is the point number one. That is, you can say, let's say, 0 into infinity जैसा, ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए, ठीक है। Come on the note number two. If any of the limits, if any of the limits on the right hand side is non-zero, finite, non-zero finite, then it can always apply. It can always be applied. So that is the two important condition here, beta. So, है ना? Okay, beta. And note number three is that we can do note number two, we can do note number two only if it is in it is in product form of entire expression, it is in product form of entire expression. That is, तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि let's say sir, limit x tending to 2 x square plus 3 into का fx. Okay, so basically what we can do, so limit x tending to 2, this is the function here, so this is 7 into fx, so 7 is the constant function, it is outside from the limit, 7 times limit x tending to a fx. So beta, this is valid, this is always valid, ये हमेशा वैलिड है बेटा। यू कैन डू लाइक दैट हियर, तुम ऐसे कर सकते हो। तो देखो बेटा, तुम लिमिट को तभी लगाओगे ना जब वो पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में, है ना, है ना। वी कैन डू नोट नंबर टू ओनली इफ इट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन, ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, तब जाके तुम ऐसा कर सकते हो। अदरवाइज तुम करोगे बेटा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। करने का सोचना भी मत, कुछ और कर लेना बेटा, ये काम मत करना, है ना। चल, अब जैसे यहाँ पे, है ना, एक ऑब्जर्वेशन देख लो। जैसे मान लो कि ऐसा दिया है क्वेश्चन, लिमिट, क्वेश्चन ही बोलो, ऐसे देख लो।
limit extending to 2 xx square plus 3 into fx plus gx अपॉन hx ये तेरे को दिया गया है, दिस इज गिवन टू यू। तो बेटा अब कभी कभी बच्चे ऐसे कर लेते हैं बेटा, बहुत तेज तर्रार जो बच्चे होते हैं वो ऐसे कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 एंड दिस इज 7, 7 टाइम्स fx प्लस gx अपॉन hx। बेटा वी कैन है ना, दिस इज नॉट वैलिड बेटा, दिस इज नॉट वैलिड। व्हाई? रीजन इज दैट एज x स्क्वायर प्लस 3 इज नॉट इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ इंटायर एक्सप्रेशन। ये पूरे देखो, ये सिर्फ इसका बेटा प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है। मैंने क्या बोला था कि बेटा पूरे इंटायर एक्सप्रेशन का बेटा प्रोडक्ट होना चाहिए, इट इज इन द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ फुल इंटायर एक्सप्रेशन। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग एज xx square plus 3 is not in the product form of entire expression, है ना। ये पूरे इंटायर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है। ओके आई थिंक दिस इज टू क्लियर यू गाइस, दैट इज क्लियर ना बेटा, एनी डाउट? तो हियर बेटा टू इंपॉर्टेंट कंडीशन इज हाँ, तो ये पूरे एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में बेटा नहीं था, दैट्स व्हाई। ओके नोट इट डाउन बेटा फास्टली, जल्दी से नोट कर लो इसको। डन बेटा, ओके फोर्थ रूल्स, लिमिट extending to a fx upon gx। सो तुम इससे सेपरेट करके भी तुम लिमिट लगा सकते हो, यू कैन अप्लाई लिमिट separately, limit extending to a fx upon limit extending to a gx। okay provided right hand side is not any indeterminate form,
Okay, right hand side is not any indeterminate form. Okay, so this is very important statement here, इसको भी नोट कर लो. नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ नंबर. अब बेटा इसमें बहुत सारा क्वेश्चन नहीं बनता है, विच इज द टूल्स यू कैन से. अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, इसमें बहुत लिमिट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द कैलकुलस सेक्शन. जेई के लिए बेटा फेवरेट है, जेई का बहुत फेवरेट चैप्टर है. अब देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ जी एक्स. बेटा दिस इज द कॉम्पोजिट फंक्शन. ये कैसा फंक्शन है बेटा, मुझे पता है ना, कंपोजिट फंक्शन. तो बेटा इसमें ऐसा होता है कि आप एफ को बाहर निकाल लो और अंदर में जो फंक्शन है ना उसके ऊपर लिमिट लगा दो. बट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोवाइडेड एफ एक्स इज, तुम एफ को तभी बाहर निकालोगे ना बेटा जब एफ बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा. सो प्रोवाइडेड एफ एक्स इज continuous at the at the at the limiting value of gx at x is equals to a. Okay, so provided fx is continuous at the limiting value of gx at x is equals to a. तो ये तुमको छोटी सी बात बेटा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी तुम इसको बेटा लिमिट लगाओगे, तभी तुम बेटा इसको ऐसा कर सकते हो जब एफ क्या बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो. यदि एफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है तुम ऐसा नहीं कर सकते. जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. दिस इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो बेटा वी कैन नॉट राइट, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. क्योंकि तुमको देख बेटा यहाँ पे कैसा है, देख ये जो एफ एक्स है ना बेटा, ये बेटा एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, लेकिन इसके अंदर में जो कुछ लिखा है ना बेटा, ये क्या है बेटा, ये जी एक्स. दिस इज एफ एक्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज द एफ एक्स एंड एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो अंदर में लिखा है ना बेटा, इट इज जी एक्स. तो बेटा यू डू नो वेरी वेल ना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुमको पता है ना बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीग्रल वैल्यू. ये इंटीजर पे बेटा क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है. देखो ये तो ग्राफ होता है ना बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का, तो देख रहे हो ना, जितना भी इंटीग्रल वैल्यू है बेटा, जितना भी इंटीग्रल वैल्यू बेटा, ये क्या है, ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. ओके बच्चों, ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. सब देखो, सब जगह देख रहे हो बेटा, इंटीजर पे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो बेटा है ना, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, लिख दो एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज discontinuous is discontinuous at x is equals to 6 because यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 है, ये पूरा फंक्शन टेंडिंग टू 6 होगा, which is yeah you can say which is which is which is which is limiting value of x square plus 5 at x is equals to 1. हाँ, so this is the explanation.
बेटा एनीथिंग डाउट हियर? ओके, नोट इट डाउन बेटा, नोट करो जल्दी से नोट कर लो बेटा। ओके बेटा, डन बेटा। बेटा पॉइंट्स, आज बेटा थ्योरी ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि आज हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आज ज्यादा होगा, but not boring. It's very important because without theoretical part, we cannot apply anything. First point, do not break or limit into LHM and RHM unless it is required. It is required. देखो बेटा, no need to check LHM and RHM in every question, है ना? जैसे देखो, 1 second, just to observe one thing, observation. Let's say question is that the limit extending to 5 x square minus 25 upon x minus 5. And beta, first of all, checking the form. Very simple question. So form is beta 0 by 0. अब देखो, अब 0 by 0 फॉर्म तो तुमको पता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तुमको पता है, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, बताओगा तुम? 0 by 0 होता है, फिर क्या होता है? इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? 0 इंटू इन्फिनिटी, फिर क्या होता है? 0 का पावर 0, फिर इन्फिनिटी का पावर 0 एंड 1 का पावर इन्फिनिटी. दिस इज 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म. ओके, अब उसी में से बेटा एक फॉर्म बन गया, ए वाला. अब देखो, मुझे किसी भी क्वेश्चन की लिमिट का, किसी भी क्वेश्चन का, एनी क्वेश्चन ऑफ द लिमिट, वी कैन एक्सेप्ट एनी आंसर विच इज फाइनाइट, जो फाइनाइट होना चाहिए, बट फंक्शन के बेटा नीचे में तो 0 आ जाएगा, तो फंक्शन तो अनडिफाइंड हो जाएगा बेटा, तुमको पता है. तो हाउ टू रिप्लेस x minus 5 from denominator? तो यू हैव टू यूजिंग बेसिक मैनिपुलेशन. तो उसको x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 लिख सकते हैं. फिर क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 अपॉन x minus 5, and this is cancel out from each other. So finally, limit extending to 5 x plus 5, and your limiting value is 10. But someone student is asked to me, sir, we can solve this question by RHL and LHL. Yeah, you can also solve, no problem. तुम सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं. सेम क्वेश्चन में मान लो तुम RHL निकालो. RHL क्या होगा बेटा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 प्लस fx. अरे कोई दिक्कत है?
तो क्या हो जाएगा बेटा? तो फाइनली क्या होगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ एक्स क्या है? एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। और तुमको पता है कि जब एक्स 5 को टेंड कर रहा है, मैंने पढ़ाया था ना आरएचएल में, एक्स को हम 5 प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, जहां जहां एक्स वहां क्या डालोगे? 5 प्लस एच। अरे डालोगे -25 और एक्स की जगह पे 5 प्लस एच -5। तो क्या बनेगा बेटा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 5 प्लस एच, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 5 प्लस एच का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और नीचे में 5 प्लस एच -5। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा यहाँ, क्या बनेगा? लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, 5 प्लस एच -5 यूजिंग ए प्लस बी ए माइनस बी, 5 प्लस एच प्लस 5, नीचे में बेटा 5 प्लस एच -5। ओके, सो दिस इज कैंसल आउट। तो फाइनली बेटा लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 5 plus h plus 5. So this is limit s tending to 0, 10 plus h, and that is equal to 10. This is your RHL. Okay. And we have to check LHL. Okay ना? अब LHL करो सॉल्व। अब LHL निकालो। 1 second। चलो हम लोग अब LHL निकालते हैं। अब LHL कैसे निकलेगा बेटा? LHL इधर निकालो, इधर, यहाँ LHL निकालो। सेम क्वेश्चन का LHL क्या होगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस एफ एक्स। ओके, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस, और एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? एक्स एक्स पर -25 अपॉन एक्स -5। अब x को रिप्लेस कर दो 5 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा? लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, 5 माइनस एच का स्क्वायर -5 का स्क्वायर अपॉन में 5 माइनस एच -5। फाइनली बेटा बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 5 माइनस एच प्लस 5, 5 माइनस एच -5, नीचे में 5 minus h minus 5. This is get cancelled. So finally, limit s tending to 0, 5 minus h plus 5. So limit s tending to 0, 10 minus h, that is equal to 10. So basically, beta, here what? LHL is equal to RHL. So limit x tending to 5, x square minus 25 upon x minus 5, and its answer will be always 10. Its answer will be always 10. देखो बेटा यहाँ पे आरएचएल यदि 10 आ गया, एलएचएल 10 आ गया, तो लिमिट का वैल्यू बेटा क्या आ जाएगा? 10। बस देखो तो बेटा दिस इज वेरी सिंपल मेथड, बट दिस इज क्वाइट अ लेंदी, तो थोड़ा सा बेटा लेंदी है बेटा। तो कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। हाँ, बट दिस basic manipulation is very simple method. You can solve easily within 2 to 3 minutes, but by the LHL, RHL, it is a quite a lengthy method. But everything fine, na? Any doubt? Samita, Aditi, Sai Akshit, we doubt beta? Any doubt? No doubt, sir. No doubt, sir. Everything fine now? कोई डाउट नहीं है। Yes, sir. Okay. तो बेटा ठीक है, फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, आगे की चीजें कल देखेंगे। ठीक है, हम लोग कल फिर आगे देखेंगे बेटा, ठीक है ना?
Okay.